वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज मैं डिस्कस करबा मिडिल टर्म्स बाइनोमियल थ्योरम रे गोटे मिडिल टर्म्स केमती बाहर करा जीवो सेटा मैं डिस्कस करबा। तो फर्स्ट मैं इठी दुटा डेफिनेशन देचे। इफ n is even then there will be one middle term, that is n by 2 plus 1th term is the middle term. If n is odd then there will be two middle terms, that is n plus 1 by 2 and n plus 1 by 2 plus 1th term is the middle term. By n plus 1 by 2 plus 1 to कम लिखचे n plus 3 by 2 are the middle terms. एटा को पिला माने स्टूडेंट्स हम गोटे एग्जांपल द्वारा बुझे परिबा। देखो सपोज देखो सपोज मु तुमको कहली a plus x रो स्क्वायर, तार रिजल्ट हम केते जानि छै ना a स्क्वायर प्लस 2ax plus x square. So एबे जदि मु तुम पचारबी व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power 2, तब तमे केते कहबो द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power 2 is what? मिडिल टर्म केते कहबा that is 2ax. सिंपली तमे कहबो 2ax हला। तो एटा को हम केमती पाइले देखो फर्स्ट आम फर्मूला द्वारा केमती पाइबा। मु टिके आगु कोन कहली इफ n is even then there will be one middle term, that is n by 2 plus 1th term is the middle term. आम एग्जांपल गोटे छोटे एग्जांपल इमीडिएटली जानि परछे ए होउची मिडिल टर्म, बट ए फॉर्मूला टू को आम तादरे अप्लाई करबा। देखो केमती एबे जदि मु क्वेश्चन पचारबी व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power 2, तो आम डेफिनेशन अनुसार कोन अछि n जाय केते अछि 2 टा होउची गोटे कोन इवन नंबर। तो इवन नंबर अच्छी माने आम डेफिनेशन कौन कौन ना गोटे मिडिल टर्म बाहर। तो से मिडिल टर्म टा कौन हो ना n by 2 plus 1, ताले हमें कौन करिया n by 2 plus 1 बा हमें कहि परिबा 2 by 2 plus 1 बा कहि परिबा 1 plus 1 बा कहि परिबा सेकंड टर्म is the middle term, is the middle term. तबे ए जो मैं डेफिनेशन टा देइथिले से अनुसार हमें बाहर कले कोन a plus x to the power 2 थिले तार मिडिल टर्म टा कोन हो ना गोटे मिडिल टर्म भरिबो एंड से मिडिल टर्म टा कोन पे केमती भरला ना n by 2 plus 1, दैट मींस सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म, जोटा कि हमें डायरेक्ट एग्जांपल जानि परथिले। नेक्स्ट सेकंड जीवा इफ n is odd then there will be two middle terms. हमें जानि छे जे गोटे एग्जांपल द्वारा मैं बुझेबा। देखो सपोज मु कहली a plus x रो होल क्यूब, ताले एटा को जदि एक्सपेंड करिया हम पर केतेटा टर्म आसीबो चारटा टर्म आसीबो। केमते आसीबो देखो आमे जानचे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो जितेबाला a plus x रो क्यूब करछे चारटा टर्म आछे, तो चारिटा टर्म रे आमे गोटे सिंगल टर्म को मिडिल टर्म बोली कहि परिबाने। ताले एठी आमे कोन कहबा नै दीटा को टर्म को मिडिल टर्म बोली कहि परिबा। ता माने ए एग्जांपल हम बुझुचे जे सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power 3। ताले सेई गोटा को हम फार्मूला द्वारा बाहर करबा चेष्टा करिया। देखो एठी कोन अछि इफ n is odd then there will be two middle terms, that is n plus 1 by 2 and n plus 1 by 2 plus 1, जोटा को हम लिखि परिबा कोन n plus 1 plus by 2 plus 1 को ऐड कले हम को n plus 3 by 2। ताले सिंपली हम कहि परिया n जदि गोटे n odd n is the odd number then n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2 are the middle terms. तो से एग्जांपल को देखिबा ऑलरेडी हम जानि साचे सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर द मिडिल टर्म्स। ए एग्जांपल छोटे एग्जांपल हम जानि पारि छै। तले हम डायरेक्टली देखो केम लिखिबा n is equal to 3 गोटे ऑड नंबर आसिला, तले हम कहि परिबा सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स सिंस n is odd here, so there will be two middle terms and से मिडिल टर्म फार्मूला हम कोन दैछे ना n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2। n जरा पर केते अछि ता 3 plus 1 by 2 and 3 plus 3 by 2, that is 3 plus 1 4 by 2, that is second and third term are the second and third term are the कोन middle terms in the expansion of a plus x to the power cube। देखा इथे हम बोधे बाहरी की थिला सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म बाहरी की थिला। ओके सो स्टूडेंट्स बर्तमान में
यहाँ आम डेफिनेशनटा कहीदेले तापर आम जोड़े प्रोब्लेम आरी पर करवा सो दैट आम क्लैरिटी पाइबा जे मिडिल टर्म्स आम केमती बाहर। सो गोटे क्वेश्चन आम फास्ट दवा देख फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of x square plus 1 by x square to the power 10. So आरे मिडिल टर्म बाहर करवा। सो डेफिनेशन से देख कौन अच्छी n कौन अच्छी n इज इक्वल टू 10 कौन 10 इज इक्वल कौन अच्छी इवन नंबर। तो इवन नंबर अच्छी मैंने कौन डिसाइड करबा कौन कहले ना देयर विल बी one middle term that is हम कौन कही परिबा n by 2 plus 1th term that is 10 by 2 plus 1 10 by 2 5 that means sixth term is the middle term। तो सिक्स टर्म इज द मिडिल टर्म आसला। तो नेक्स्ट किंतु आम कौन करवा तुमको ये क्वेश्चन जो एग्जाम दुईटा जिनस देखो केते नंबर टर्मटा मिडिल टर्म एंड से टर्मटा के बाहर करवा। तो जेहेतु आम जाने सिक्स टर्म इज द मिडिल टर्म जानले मतलब से सिक्स टर्मटा काढ़ी देवा पड़ो जोटा कि आम प्रीवियस क्लास जानीचे जे सिक्स टर्म सेवेन्थ टर्म केमती बाहर। तो आम जानीचे कौन ना सिक्स टर्म मैंने लिखिपर 5 + 1 दैट मीन्स टी r+1 फर्मुलाटा को ये यूज करवा दैट इज NCR a to the power n minus r x to the power r। तो ये देख n जगह केते अच्छी 10 अच्छी 10c r जगह केते पहले 5 a जगह केते अच्छी ना x square 10 minus 5 that is 5 1 by x square to the power 5। ताले में केते पहले आंसर 10c 5। ताले ए क्वेश्चन आंसर हबो जेतल कहबो फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x square plus 1 by x square to the power 10 ताले में कहबा जे सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल टर्म एंड दैट टर्म इज 10c 5। नेक्स्ट एटा स्टूडेंट्स नोट करनियो सेकंड क्वेश्चन में करवा तापरे एटा टिके चेंज कर दो से क्वेश्चन टिके मु चेंज कर देखा फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x square plus 1 by x square to the power 11 सपोज मैं कली। तो ये देखो डेफिनेशन कौन कौन इफ n इज ऑड देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। तो ये कौन अच्छी n जगह कौन अच्छी ऑड नंबर अच्छी 11 अच्छी ऑड हो गला। सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ताले फॉर्मूला में कौन कहबा टू मिडिल टर्म्स माने हम कौन कहबा मत कहबे फर्स्ट कौन कर परिबा टू मिडिल टर्म्स मैंने आम फर्मुला यूज करवा दैट मीन्स n+1 by 2 एंड n+3 by 2 आर द मिडिल टर्म्स। ताले हम से लिख परिबा सो n+1 by 2 एंड n+3 by 2 टर्म आर द मिडिल टर्म्स। जहाँ आम कहीपर कौन ना 11 + 1 by 2 and 11 + 3 by 2 that is 11 + 1 12 by 6th that means 6th and 7th terms are middle terms। तो तुम टैक्स है कौन ना तुम्हें बाहर कर मत सेंड कर T7th बाहर कर एंड T6th एंड T7th जो फर्मुलाटा मुझे टिके आगुरी बतेली बाहर करके मोर ये व्हाट्सएप नंबर 8018455928 रे सेंड करिवो। थैंक यू।